Good afternoon, all. Today we are going to do what nutrition in human being. Nutrition in human being, that is related to what? That is related to digestive system. Digestive system you are reading from class 4 onwards. From class 4 only. So you might be knowing that what are the different organs that are involved in the digestive system. What are the main organs involved in digestive system? First is what? Mouth. Second, esophagus. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine. And sixth is what? Sixth is anus, yeah, rectum. So these are the different organs which is involved in what? Which is involved in digestive system. Whenever any digestion we take in nutrition, from where do we take the nutrition? From which part of our body? From the mouth. When we are taking in food, we are taking it from where? This is our what? Mouth. We take in food, nutrition, you can say what? Nutrition from our mouth. In the mouth, what do we have? We have our teeth. What are the different parts of the mouth? Lips. Lips are there, which is acting as our guard. There is tongue. There is teeth. Okay. So all of them have their own importance. Teeth, we have 4 types of 4 types of teeth. Can anyone tell me? 4 types or 3 types? Anyone? 5 types. What are different types of teeth? एक होता है इंसीजर. क्या क्या होता है? टीथ में क्या क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, मोलर and what? Premolar. इंसीजर is your front teeth. ये जो फ्लैट का जो टीथ है, फ्रंट टीथ है, वो क्या है? That is incisor. Then canine is the side one, जो कि टीयरिंग के काम में आता है, थोड़ा नोकीला टाइप पॉइंटेड होता है. जो पीछे साइड में होता है वो क्या होता है? मोलर एंड premolar. That is used for grinding and chewing. This one is used for biting. This one is used for tearing. This one is used for chewing and grinding. So when we take in the food, first of all, what we have to do? Whatever we are taking in, that is a complex type of food. Complex material we are taking, complex organic compound we are taking. First of all, we just don't swallow the food. We are not like a snake that we are going to swallow the food. First of all, we have to chew the food. Okay, bring it into smaller, simpler form. And for that, what is needed? Teeth is needed. उसके लिए क्या चाहिए? Teeth की जरूरत होती है. Incisor, canine, molar, and premolars are required. And there is one thing important also that you should know, that we don't just chew it in the dry form. The food is not in the dry form. If it will be in the dry form, then all your buccal cavity, that is upper hard palate and lower palate, soft palate, it will get damaged. है या नहीं? अगर आप सूखा कुछ चबाओगे, कुरकुरे खाओ और निगलने की कोशिश करो, तो क्या होगा? ऊपर का पैलेट, हार्ड पैलेट जो होता है, जो ये वाला पोर्शन हुआ हार्ड पैलेट हुआ, और नीचे का जो पोर्शन होता है, that is soft palate, वो क्या होगा? दोनों डैमेज हो जाएंगे. It will be difficult for digestion, then further digestion process में मुश्किल आएगी. तो उसलिए वहां पर क्या होता है? ये जो food जो होते हैं, they get mixed up with what? They get mixed up with the saliva which is present inside our mouth. And how do saliva comes out? It is secreted itself, isn't it? When some tasty food will come in front of you, then obviously what is going to happen? Your mouth starts watering or not? Tell me.
your mouth starts watering, saliva is released, and that is called what? Salivary amylase. वो जो salivary gland में present होता है, यहाँ पे mouth के पास होता है, ठीक है, ये क्या है? That is salivary gland. और salivary gland secrete क्या करता है? Salivary amylase. Okay, what does it secrete? It secrete salivary amylase. So what is the work of salivary amylase? What does it do? It acts as a biocatalyst. ये कैसे act करता है? एक biocatalyst की तरह act करता है salivary amylase. Okay, catalyst का काम क्या है? To increase the rate of reaction, to make it faster. So when this salivary amylase get mixed with the food particle becomes soft. Food particle क्या हो जाएगा? Soft हो जाएगा. And then ये वाला जो हमारा portion है, ये जो portion है, mouth, this is also called as what? Buccal cavity. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? Mouth वाला जो portion है, that is called what? That is called buccal cavity. Cavity क्यों बोलते हैं? Cavity का मतलब क्या होता है? What does cavity means? Cavity means a hole. What does cavity means? Cavity means a hole. When you will open your mouth, you will find what? A hole. एक बड़ा सा खाली सा पोर्शन मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी कहा जाता है. That is called buccal cavity. So this extends to a long tubular pipe like structure. ठीक है, एक long tubular pipe like structure होता है. इस tubular pipe like structure को हम लोग क्या बोलते हैं? That is oesophagus. Is everyone there in the class? Open Yes, your ma'am. videos. Open your videos, everybody. All of you open your videos. Keep your videos open. This opens into a J-shaped structure. This J-shaped structure is what? This is what? This is stomach. What is it? This is stomach. This stomach is connected to what? This is connected to, you can say, small intestine. This is what? This is small intestine, which is connected to what? Which is connected to this is your large intestine. Okay. Okay, everybody. Are you able to see the figure properly? So this is a small intestine. This is a coil-like structure, complex coil-like structure. It is, you know, the length of small intestine. Anybody? The length of a small 7 meters. intestine is what? 6 meters. Its length is what? 6 meters in length, and this is 1.5 meter in length. Large intestine का length क्या होता है? 1.5 meter. There might be a question in your mind that why is this called a small intestine, which is so large in number, 6 meter है और ये 1.5 meter है, तो इसको small और इसको big क्यों कहा जा रहा है? The reason behind it, its name is given on the basis of the width. ठीक है, किस बेसिस पे इसको large या small कहा गया है? On the basis of the width. The width of the large intestine is more in comparison to that of the what? Small intestine. Okay, so this is the main organs. इसको क्या बोलेंगे? ये है large intestine. This coil-like structure is small intestine.
Okay, this is anus. So these are the organs which are involved in what? Which are involved in digestive system. In the digestion, we start with ingestion. We start with what? Ingestion, then digestion, and with digestion, what happen? Absorption takes place, and after absorption, what is there? Ejection. Ejection is there. So nutrition in human being, the mode of nutrition in human being, that is holozoic mode of nutrition, consists of what? Four main processes. That is what? That is ingestion, digestion, absorption, and then at the last is what? At the last is ejection. And the organs involved in digestive system are what? Mouth. ये क्या हो गया? Mouth. माउथ के पार्ट्स में फिर अलग अलग है. टंग हो गया आपका, टिट हो गया, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद है ओसोफेगस. ओसोफेगस के बाद स्टोमक, एंड स्टोमक के बाद ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड हियर इज एनस. In mouth, what do we do? In the mouth, we take in the food. Intake, that is ingestion takes place where? Ingestion takes place in the mouth. In the mouth, we bring the complex form of food into the simpler form with the help of what? With the help of salivary juice, that is salivary amylase. Some salivary amylase, what does it do? It converts the starch. Okay, it converts the starch, that is carbohydrate. Mainly what do we take in? We take in carbohydrate. Carbohydrate may be in any form. It may be starch, it may be glucose or glycogen. तो यहाँ पर ये क्या करता है? स्टार्च को सिंपल सुगर में कन्वर्ट करता है. Okay, it converts the starch into simple sugar, and then from mouth, where does the food goes? Food goes in the oesophagus. Now, when food goes in the oesophagus here, it is not happening very simply. कि आप एक पाइप लो, ये पाइप है, यहाँ पर से खाना आया और नीचे चला आया, सीधे नीचे चला आया, सीधे सीधे, ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या होता है? In the esophagus, what is happening? Peristalsis is occurring. What is occurring here? Peristalsis. Peristalsis, or you can say peristaltic movement. क्या बोल सकते हैं इसको? Peristaltic movement. Now, what is this peristaltic movement? This peristaltic movement is the rhythmic contraction and expansion. क्या है ये? Rhythmic contraction and expansion. देखो क्या हो रहा है. ये जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप के बगल से एक विंड पाइप भी जाता है. यहाँ पर क्या होता है? विंड पाइप. अगर ये हमारा माउथ है तो माउथ से क्या कनेक्टेड है? फूड पाइप एंड विंड पाइप. विंड पाइप comes the first, and behind the wind pipe, food pipe is present. Do you know the position? आप पोजीशन समझ गए हैं क्लास? हेलो हेलो. Yes, ma'am. Now next what happens? What is this peristaltic movement? तो peristaltic movement क्या है? कि यहाँ पर जो है पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा. तो जहां पे एक्सपेंशन हो रहा है वहां से खाना धीरे धीरे सरकते हुए अपने आप यहाँ पर चला आता है. तो ये फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस. व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस एपिग्लॉटिस? ये एक क्या कहा जाता है? जैसे नाली में ये जाली लगाया जाता है ना, कोई भी जो नाली होता है, सीवेज सिस्टम होता है, वहां पे एक जाली लगाया जाता है. You know, all of you have seen. So what does this epiglottis do? When it has to allow the food only to go, and it happens on its own. जैसे ही फूड आएगा ये वाला खुल जाएगा. नहीं तो खाना क्या विंड पाइप में भी जा सकता है. ठीक है, खाना जो है विंड पाइप में भी जा सकता है. It is always said, don't speak while eating. You have heard this thing?
क्लास, डोंट स्पीक वाइल ईटिंग। वाई? हम लोग सरक जाते हैं, तो सरक क्यों जाते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर पार्टिकल्स विंड पाइप में चला जाता है तो खाना वहां पर जाके क्या होगा, फंस जाएगा। बिकॉज दैट इज द एरिया फॉर व्हाट, फॉर द पैसेज ऑफ द एयर, नॉट फॉर द फूड। सो यहाँ पर एपिग्लॉटिस एक्ट करता है as a source of allowing only the food particles to enter into the what, enters into the food pipe, that is the esophagus। यहाँ से ये खाना कहाँ जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते, फिर ये यहाँ पर खाना आता है। ये जो स्टमक भी है, स्टमक का भी 3 पार्ट है। इसको पायरोलिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पायरोलिक पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये जो पूरा सिस्टम है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गट। ओके, गट सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। तो ये जो है इस पूरे सिस्टम में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा मूवमेंट वर्क करता है, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, विच मूवमेंट इज वर्किंग है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्योंकि आप यहाँ से खाना यहाँ आ रहा है, ये वाला तो बहुत पतला है, दिस इज वेरी थिन, so how the food is going to move here in this portion? So here also peristaltic movement is working, expansion contraction expansion contraction होते हुए फिर यहाँ पर भी इवन लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, peristaltic movement होते रहता है। Is this point clear to one and all? Hello? So I was telling you that the stomach becomes empty after 2 hours. Sometimes you feel that you are hungry after 4 hours. So it depends upon what? It depends upon the kind of nutrients you are taking in. If you are taking in fat, some oily food you have taken, puri, kachori, if you have eaten, you feel very heavy. You don't want to eat. For 4 hours you don't want to eat because it will take some time to digest. It will take some time to digest. What is happening here? Partial digestion is taking place in your stomach. It will take some time for the stomach to make it digested, and then only it will be transferred to the small intestine. उसके बाद यहाँ पे transfer होगा। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा the nutrients which you are taking in, whether you are taking carbohydrate, you are taking in fats, you are taking in protein, what you are taking in. During the fast you are very hungry. You feel hungry in fast. All of us feel hungry in fast because in fast we are not taking in food items like carbohydrate, which include carbohydrate. We are mainly depending upon what? We are depending upon the vitamins and minerals in the form of what? Fruits. Or protein we are taking, milk we are taking, and it gets digested very easily. And so that's why we feel very hungry during the fast. But this don't happen when we eat our normal food, which includes what? Carbohydrates. Okay, class. So in the entire alimentary canal, what is happening? Peristaltic movement is taking place. The passage of the food is taking place from the mouth to the esophagus, through the stomach, then to the small intestine, and then from the small intestine to the large intestine, and then finally ejected through what? Ejected through anus. Okay, the undigested waste food material in solid form is ejected through the anus. So these were the organs which were involved in what? That were involved in the digestive system, in the digestion of food. But digestion don't happen alone by these, you can say these organs. There are certain glands also involved. The first, you can say the glands involved in what? Involved in digestion. What are the glands that are involved in digestion? First is salivary gland. पहला ग्लैंड कौन है? तो पहला ग्लैंड कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड है।
What does salivary gland secrete? Where it is present? First of all, position. Where it is present? Near our mouth. कहाँ पर उसका पोजीशन है? माउथ के पास है. ठीक है. salivary gland. Then when you will come down, यहाँ पे हो गया salivary gland. यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये स्टोमक के पास इस तरह का स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है. दिस इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. This is the biggest gland. What it is? What it is? लीवर. लीवर. ये क्या है? ये है लीवर. और लीवर में कौन सा प्रेजेंट होता है? कौन सा सिक्रीशन होता है? बाइल जूस का. क्या सिक्रीट करता है ये? What does it secrete? बाइल जूस. ठीक है. यहाँ पर स्टोमक के पीछे में, तो लीवर कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिसाइड द स्टमक. इट इज प्रेजेंट जस्ट बिसाइड द स्टमक. ओके. एंड बिहाइंड द स्टमक, इसके पीछे में, स्टमक के पीछे में क्या प्रेजेंट है? मैं इस तरह से बना दे रही हूँ. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे व्हाट इज दिस ऑर्गन? दिस इज पैनक्रियास. दिस इज पैनक्रियास. ओके एवरीवन. तो कौन कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है डाइजेशन प्रोसेस में? व्हाट इज द डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन this digestive system? First one is salivary gland. What does salivary gland secrete? Salivary gland secretes salivary amylase को secrete करता है. ठीक है. ये क्या secrete करता है? salivary amylase को secrete करता है. उसके बाद आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड जो है that is liver. लीवर क्या secrete करता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को सिक्रीट करता है. I will do the NCERT after explaining this thing to you. Is it okay to everybody? Is it okay, one and all? Third gland which is involved here is pancreas. तो pancreas क्या secrete करता है? Pancreas secrete pancreatic juice. ठीक है. What is secrete? Pancreatic juice. This is of mainly you can say two types. Okay, एक है trypsin और एक है क्या? lipase. Is this point clear to you? Glands कौन कौन से involved है? तो एक salivary gland. How many types of pancreatic juice? It is mainly of two types, and somewhere you will find that it is given three types. Okay, but here I am going to discuss with you this about these two, that is trypsin and lipase. तो glands कौन कौन से involved है यहाँ पे? salivary gland, liver and pancreas. pancreas को हम कहते हैं एक्सोक्राइन या मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड. इसको क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, दैट आई विल डिस्कस विद यू लेटर. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. दिस पार्ट, अपर पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट? ड्यूडेनम. क्या बोलते हैं इसको? ड्यूडेनम. ये जो है, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट और कन्फाइंड विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं? जेजनम. और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये लास्ट वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलियम. ओके. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है. ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में क्या क्या आता है? ड्यूडेनम में हमको क्या क्या मिलता है बताओ. एक चीज और यहाँ पे ये जो लीवर है, लीवर में क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर. व्हाट इज प्रेजेंट इन लीवर? गॉल ब्लैडर. व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर.
Now, what does gallbladder do? Whatever bile juice is prepared, that is stored where? स्टोर करके कहाँ रखा जाता है? तो ये स्टोर करके रखा जाता है यहाँ गॉल ब्लैडर में. ठीक है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? So HCl is consisting of HCl, stomach is consisting of HCl, pepsin and mucus. What is the function of HCl? Work of HCl? Making the medium, that is stomach, what? Acidic in medium. Being acidic in medium, what's going to happen? Whatever food material is going to come here, if it is consisting of any harmful microorganism, then it's going to kill it. पेप्सिन क्या करेगा और म्यूकस क्या करेगा? तो म्यूकस जो है, ये जो इनर लाइनिंग जो होता है स्टमक का, उसको एसिडिक होने से क्या करता है? बचाता है. ठीक है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग एसिडिक, because if it's going to become more acidic, more than what is required, then what is going to happen? There will be burning sensation in our stomach. सुनते हो ना प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी? पेट में जलन हो रहा है, सुनते हो पेट में